see the value in my own work, but I also see the meaning in all the endeavors of the people of Fontaine. I believe I will continue to take pride in fulfilling my duties. निखिल भाई एज ऑलवेज। सबसे पहले क्या हाल चाल निखिल भाई? आज जल्दी आ गए? अरे स्पेशल प्रोग्राम है ना। वेलकम वेलकम आनस भाई, स्वागत है। क्या हाल चाल? आज स्पेशल प्रोग्राम है ना। मैं मस्त, आप बताओ। मस्त हो जाऊंगा जब 300 प्रीमोजेम्स मिल जाएंगे। टाइमर ऐसे रख दूं कि पूरा मिडिल स्क्रीन में बड़ा सा करके चिपका दूं, ये बताओ। स्पेशल प्रोग्राम किसका? अरे गेंशिन का 4.3 के बारे में बताने वाले हैं। ये टाइमर बड़ा करके मिडिल पे चिपका दूं कि ऐसा ही रहने दूं? नाइटबॉट जिंदा है? चलो नाइटबॉट तो जिंदा है, मेरे को लगा नाइटबॉट सो गया है, बट नहीं, जिंदा है। देख के खुशी खुशी हुई अंदर से। Melusines are beautiful. वैसे ही रहने दो टाइमर। अरे बहन का भाई, मुझे कुछ पता ही नहीं था। वाह, ऐसे ही ठीक है। ओके, तो ऐसे ही रखने रहने देते हैं। ऐसे ठीक है, तो ऐसे ही रहने देते हैं। क्वेस्ट करता है स्किप। अभी लाइव स्ट्रीम खत्म होता ही एंड कर दूंगा, और रात को फिर थोड़ा लेट करूंगा आज का लाइव। रात वाला जो होता है ना, तभी करेंगे, लेकिन थोड़ा लेट स्टार्ट करेंगे। हो गया। इसी में मिल जा एक कमीशन वाला। नाइस, एक कमीशन वाला हो भी गया है। बढ़िया। कौन से वर्जन से स्पेशल प्रोग्राम देखना शुरू किया था? पता नहीं यार, मैं इनाजुमा आने के पहले से ही देख रहा था। मुझे एकदम पहले नहीं पता था जब मैंने गेम स्टार्ट किया था, बट कुछ टाइम बाद मुझे पता चल गया था। स्लिम शॉट भाई हेलो, क्या हाल चाल? मुझे कोड्स के बारे में भी पता नहीं था, मेरे इन गेम फ्रेंड्स मुझे कोड्स भेजते थे। बाद में पता चला कि हाँ, ऐसा भी कुछ है। इन सब से लड़ना पड़ेगा। पायरो पायरो जियो, नहीं, पायरो पायरो क्रायो हीलर एक ही है। ये लेकर चलता है। स्लिम शर्ट भाई बताओ, क्या हाल चाल? मैंने तो 2.8 के वाली स्ट्रीम से खेलना शुरू किया था। 2.8 2.8 के वाली 2.7 से खेलना शुरू किया था। अच्छा, ये भी सही है। क्या सही है? इनखिन इनखियन, क्या नाम है? हेल पाल दिया भाई। उड़ा, मार उसे। आगे कहाँ जा रहा है बदतमीज? चल बक। हाँ, इधर, अब इधर। इस पे फोकस। हाँ, अब फ्रीज। ये बात। बस पेपर चल रहे हैं, पेपर चल रहे हैं। अच्छा हाँ, अभी तो एग्जाम के महीना चल रहा है। पुरीना का विशन वाला वॉइस लाइन सुनो।
एक मिनट। हेलो कपाइनस भाई, क्या हाल चाल? हेलो आदर्श भाई, वेलकम वेलकम। पुदीना का फेशियन वाला देखता हूँ। ये वाला तो हो गया। सेलेक्ट स्टेज, ये वाला। और ये तो आई थिंक हाँ परसों को आएगा। ये वाला एनिमे ना बहुत सारे न्यू प्लेयर्स को पता ही नहीं होगा। ऐसा एक बॉस होता है, मतलब मिनी बॉस। ओल्ड प्लेयर्स को पता है। वेनम एफ एफ, हेलो। कल कहाँ थे? कल डिस्कॉर्ड पे तो बताया था। यहाँ पे शादी चल रही थी किसी की, तो वही म्यूजिक म्यूजिक चल रहा था, इसीलिए कल नहीं आ पाया। डुअल? अरे मुझसे लड़ोगे? हाँ मेरे को याद है ये बॉस। यस, मिनी बॉस। बड़ी मुश्किल से हराया था। टू बी ऑनेस्ट काफी इजी है कंपेयर टू अभी के जो मिनी बॉस है, बट शादी हो रही है। मेरी नहीं, मेरी नहीं। मेरी होती तो मैं आज थोड़ी आता, एक हफ्ते की छुट्टी लेता। अब समझ लो। ये मर गया, मर गया। बच 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 बच। हील 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 हील, जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर, जल्दी हील। नहीं यार, हीलिंग ही खेलना पड़ेगा ऐसे तो। गंदा एचपी खा गया। अबे ये पूरी एचपी का आ गया यार। शील्ड लेना था छोटे छोटे बोर्ड्स को मार के। गलती कर दी, कोई ना। कुछ ज्यादा ही गलती हो गई, गलती हो गई। जल्दी मार। बच गया बच गया बच गया बच गया। लेकिन तीनों रिवॉर्ड्स मिलेंगे। बड़ी मुश्किल से रहा। प्लानिंग पहले ही करके रखा है। व्हाट इज दिस बिहेवियर? तीनों रिवॉर्ड्स मिल गए विद इन 150 सेकेंड्स। अपना क्या है, अपना तो हो गया, क्लियर तो हो गया। गेंशिन का वर्ल्ड क्वेस्ट। कौन सा वर्ल्ड क्वेस्ट कर रहे हो? अब ऐसा अभी तो स्पीड रन करने वाले थे सब। मैंने भी दूसरी बार में हराया, मैंने भी यही किया, अंधा चला गया। अरे मैंने देखा ही नहीं ना कि वहां से शील्ड मिलेंगे वो छोटे छोटे चिलगुजों से। वरना मैं मेरे स्लाइम्स मरते ही नहीं, सबका फोकस लगा देता वहां पे, जाके ये लोग अंधा पेल देते। I'm also gonna do that for to farm primogems for Raiden. करो करो, farming for real bro. In search of the algae sea. In search of the algae sea. अच्छा, main world quest.
इन सर्च ऑफ द वर्ल्ड एल्गी सी वही वाला है ना, प्राइमोडियल सी वाटर सोर्स ऑफ प्राइमोडियल सी, सोर्स ऑफ प्राइमोडियल सी वाटर, वाटर, बॉटल ऑफ वाटर। आखिरी सील तोड़ना बाकी है, इसके कितने बाकी है क्वेस्ट वो तो याद भी नहीं, मैं तो बस अंधा कर गया वो। होपफुली तीनों हो गए हो, आई मीन चारों हो गए, बचिया भाई। लियोए में एक कमीशन के लिए मैंने लियोए का कमीशन सिलेक्ट करके रखा है, लेकिन वो कमीशन मिलता ही नहीं है। कैटरपिलर एंड वगैरह है जिसमें, हाँ हाँ वही। प्राइमोडियल सी वाटर के सोर्स में भी उसी वाले पे जाते हो। सुमेरु का एक ऐसा होना चाहिए जो एक्स्ट्रा मोरा दे, एक्सपीडिशन रिवार्ड, मतलब 5000 प्लस 1250। ऐसा सुमेरु का भी होना चाहिए, सुमेरु बोल रहा हूँ सॉरी, फाउंटेन का। सुमेरु में तो दो है, साइनो और फारूजान। फाउंटेन का भी एक होना चाहिए। ओके अर्बन आई गोइंग टू डू फार्मिंग। ओके बस लाइव स्ट्रीम के टाइम आ जाना, कोड्स मत मिस करना। वैसे ये भी ज्वाइन कर सकते हो डिस्कॉर्ड, स्ट्रीम के बाद मैं डिस्कॉर्ड पे अपडेट कर दूंगा, और अभी जो लोग हैं वो डिस्कॉर्ड पे ड्यूरिंग स्ट्रीम ही अपडेट कर देंगे, मैं स्ट्रीम के बाद अपडेट कर दूंगा, रात के स्ट्रीम पे भी पिन कर दूंगा कमेंट्स में। Where is the unseen रेजर वाला कर लिए, Where is the unseen रेजर, हाँ वो तो कर लिया, वो मिलता रहता था, वो बहुत बार मिला था। आई थिंक कैज़म में भी था ना उसका एक पार्ट, कैज़म आने के बाद। फारूजान है तो फारूजान सुमेरु का, मैं फाउंटेन की बात कर रहा हूँ, फाउंटेन का नहीं है। फाउंटेन के लिए चाहिए, फाउंटेन। Need someone to do that in Fontaine. फुरिना का विजन वाला वॉइस लाइन, ओके। Okay bro, bye bye, I'll there at second live stream. Okay. फिर कौन से के लिए लिवे कर रखा है, जीहुआ, जीहुआ जीहुआ वाला। Once the ancient prophecy came to an end and everything was over, I fell into low spirits for a very long time. People who stand on the stage basking in the adulation of their audience must also bear the pressures of being in the public eye and living up to everyone's expectations. But I knew very well my person wouldn't be enough, and that putting on the act of a god would be the only way to satisfy their adoration. And at the end of the day, all I ever experienced was loneliness. So, there came a point when I loathed the very thought of acting and locked myself in my room. It wasn't until the moment I stood on stage and faced the audience again that I realized the anxiety in my heart had dissipated. The reason I can now stand before the crowd's watchful gaze is perhaps because I have finally started to act as myself. मेरा मॉन्स्टर पूरा 100% हो गया, एक एरिया पे 94 पे अटका है। ढूंढो चेस्ट ढूंढो, इसमें क्या है, क्या लिखा है, इसका विजन के स्टोरी में क्या ऐसा है। इसका विजन देखो, ठीक है, ये जैसे क्लॉस जैसे दिख रहे हैं, टीथ जैसे दिख रहे हैं। फाउंटेन वाले कितने मेरे पास, ये है, इसके विजन पे नहीं है कुछ। इसका विजन का है, यहाँ पे भी नहीं है।
विशन का डिजाइन देख रहे हो, इसके विशन पे भी कोई ऐसा नहीं है, लिनेट के भी नहीं है, और किसी भी कैरेक्टर के कोई भी रैंडम कैरेक्टर उठा लेते हैं। इसके में भी नहीं है, वो शार्प टीथ जैसे चीज है, नहीं है। समन फ्रॉम लिव है, नहीं है। किसी भी कैरेक्टर के विशन पे वैसे नहीं है दांत जैसे चीज, सिर्फ फुरीना के विशन पे है। 1 2 3 4 यूनिक डिजाइन है इस विशन का, समझ रहे हो? इसीलिए मैंने बोला किसी यूनिक सोर्स से मिला होगा, जिस सोर्स से अब तक किसी को विशन नहीं मिला है। हाँ जी दे दो माइक पे। क्या दे दूं? आर्गॉन्स के पास पावर नहीं होता है विशन देने का, बाय द वे। ये राइडर ने कंफर्म किया था। आई मीन पावर होता है बट वो देते नहीं है, ऐसा कुछ है। या फिर शायद पावर भी नहीं होता। दो सोर्स है, एक है कैरेक्टर का विल और हेवनली प्रिंसिपल्स। लेकिन फुरीना को आई डोंट थिंक इन दोनों में से कहीं से भी मिला होगा, ये बहुत अलग ही है। प्रॉब्ली सोर्स न्यू लेते हैं। क्या दे दूं माइक पे विनोद भाई? क्या बोलो, क्या? टाइम किसका है? स्पेशल प्रोग्राम, स्पेशल प्रोग्राम है। टाइम खत्म होगा, स्पेशल प्रोग्राम शुरू होगा। न्यू अपडेट नहीं नहीं नहीं, न्यू अपडेट कहा। न्यू अपडेट का स्पेशल प्रोग्राम होता है ना, जहाँ पे बताते हैं कि नेक्स्ट अपडेट में क्या आएगा एंड 3 कोड देते हैं 300 प्रीमोजेम्स के लिए, वो। यार निवी कैसे दे सकता है? वो लाइव स्ट्रीम शो के बीच में कैसे यार, दिमाग का तोड़ दिया क्वेस्ट कर मैंने। उसकी मर्जी। वो एक आर्कॉन से कम नहीं है अभी। वो कैसे दे सकते हैं? वो आर्कॉन से कम नहीं है। इवन जो हाइड्रो आर्कॉन का पावर था, मतलब जितना कुछ भी पावर था, न्यूलेट उससे काफी ज्यादा कुछ कर सकता है विथ हिज करेंट एबिलिटी। तो ऑब्वियस सी बात है वो विशन भी ग्रांट कर सकता है। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि फुरीना को विशन न्यूलेट ने दिया है क्योंकि उसका अलग डिजाइन है, वेरी यूनिक डिजाइन है, किसी भी कैरेक्टर पे नहीं है। किसी भी कैरेक्टर के विशन पे वैसा डिजाइन है नहीं, सिर्फ फुरीना के। समझ रहे हो? न्यूलेट आने वाला है क्या? नहीं 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 नहीं, आई डोंट थिंक आएगा। कल क्यों नहीं आया? कल यहाँ पे शादी थी किसी की, तो गाने वाने चल रहे थे, इसीलिए। ओवर हील, ओवर हील है।
अभी हाइड्रो ऑर्गेनिक अथॉरिटी ये भी सही है, बट मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा। वीसी पे समझा दूंगा किसी दिन। मतलब ये ऐसे पीस गलत टाइम पे क्यों मिलते हैं यार? स्पेशल प्रोग्राम का स्पेशल लक। चुम्बेश्वरी पीस फॉर रियल ब्रो। लाइव स्ट्रीम स्टार्ट होगा ना, फिर मैं माइक ऑफ कर दूंगा। सब लोग पूरा ध्यान लाइव स्ट्रीम पे देना, वरना मिस कर जाओगे चीज है। और लाइव स्ट्रीम स्टार्ट होगा तब मैं चैट नहीं पढ़ूंगा, ठीक है? तो लाइव स्ट्रीम के बाद बातें करेंगे जब स्टार्ट होगा। सिजिल एक्सचेंज रिसेट होता है क्या? नहीं 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 नहीं। सिजिल एक्सचेंज एक बार वन टाइम है, एक बार कर लिया तो खत्म। This is order. Overheal, overheal. कब तक होगा? कब तक होगा मतलब क्या? लाइव स्ट्रीम? लाइव स्ट्रीम में देखो टाइमर तो है स्क्रीन पे, वो टाइमर खत्म होगा उसके बाद। ओके भाई। अनस भाई एक काम करना, कोड्स ना लाइव स्ट्रीम के ये बीच में, दूसरा वो है नहीं, तो डिस्कॉर्ड पे जनरल पे डाल देना। मैं स्ट्रीम के बाद ये कर दूंगा, पिन कर दूंगा एंड कोड सेक्शन में डाल दूंगा। सरपेंट तो अभी शायद स्कूल में होगा, वरना उसे बोल देता मैं। और डिस्कॉर्ड जिसने ज्वाइन नहीं किया जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लो यार। स्टेबलाइज। अभी डिस्कॉर्ड फॉरगेट करता हूँ, और अभी डिस्कॉर्ड फॉरगेट करता हूँ, अगर होता है तो। डिस्कॉर्ड फॉरगेट मतलब पासवर्ड? अरे फॉरगेट पासवर्ड से इजी है, बस मेल में कोड जाएगा, मेल में कंफर्मेशन मेल जाएगा, वहां से इजीली चेंज कर लो। बहुत सिंपल है डिस्कॉर्ड का, डिस्कॉर्ड का बहुत सिंपल है। डिस्कॉर्डे। वैसे न्यूलेट का करंट प्लूम कैसा है? जहां तक मुझे याद है न्यूलेट का प्लूम एवरेज कुछ था, मतलब कुछ बढ़िया नहीं था। मैंने एक क्वेस्ट करा, उसमें एक एनपीसी से बात करते हुए उसने सीक्रेट के बारे में कुछ पूछा, देन उसने एक लेजेंड के बारे में कहा कि एंशिएंट पीपल थिंक दैट द स्काई ऑफ टेवेट इज फेक। ये स्कारामुश ने भी बोला था। एचएसआर में कल 1600 जेट्स मिलेंगे, कर लेना, एक्सपायर हो जाएंगे इस वर्षन के एंड में। यार मैंने ऐसे कितने वेस्ट हो गए, अगले वर्षन में आ जाएगा फिर से। प्लूम तो इरिप्लेसेबल है, मतलब ऑलमोस्ट इरिप्लेसेबल। कोई पीस है जिसे उड़ा के इसे मैक्स कर सकता हूँ? ये पीस उड़ा दूं क्या? इस पे ईआर है अच्छा खासा। ये वाला उड़ा दूं क्या इस वाले को अप करने के लिए? बहुत प्लूम है, इतने प्लूम का करूंगा क्या? ये वाला बेटर पीस है, ये वाला भी है, यही वाला उड़ा देता हूँ।
आ, आई मीन अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। वेस्ट होगा कि नहीं ये तो देखने वाली बात है। क्या करूं इस पीस का? भगवान से तो डरो भाई, इतने अच्छे पीस को उड़ा रहे हो। डर के आगे हार है। Did you tell Genshin live stream here? Did you? Legas Genshin live stream codes here. Yes, yes. Yes, I do. I'll host the live stream as well. Nah, not keeping this one. This one is going directly to the, not in the trash, but Kuki Shinobu. Maxed. Level 9. Done. Okay. 9:52 AM with the Flower of Paradise lost. Done. I see the value in my own work, but I also see नहीं ये वाले जो HSR जीता है आज उसके लिए। अच्छा दोनों में 1600 आज बैनर का अनाउंसमेंट होगा। यस 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 निखिल भ्राता। हाइड्रो ड्रैगन। चलो आज राइडन का राइडन हो जाएगा। राइडन का राइडन देखते हैं राइडन का राइडन होगा कि नहीं, पता तो चल ही जाएगा। राइडन का राइडन होगा कि नहीं वी हैव टू सी। अब क्या ही बोलूं। हेलो डीएक्सजी भाई क्या हाल चाल। लेकिन इसका क्या ही बोलूं। प्लूम तो आई थिंक मेरे पास अच्छा प्लूम है। प्लूम बढ़िया प्लूम है इसका। क्या हो गया अनोज भाई? सर्कलेट है वो। अरे वो सर्कलेट है, शौक की हो रहे हो, वो सर्कलेट है। ये वाला पीस मुझे सेंड करो। अरे वो सर्कलेट है भाई, डबल एचपी सैंड्स थोड़ी है, सर्कलेट है वो। क्या करोगे, काम का ही नहीं है वो। डबल क्रिट सर्कलेट है वो। अभी बस आधा घंटा और उसके बाद शुरू होगा लाइव स्ट्रीम। कुकी का पिछले में कितना मैक्स जाता था डैमेज? आई थिंक 33 के 33 35 इतना के तो जाता था। ये वाले सेट से देखना है कि कितना डैमेज जाएगा। अब इसमें 30 के प्लस 33 भी मैंने देखा है। चाहिए मेरे टट्टी पीस है मतलब। हेलो केको व्हाट्सअप। मंडे को ड्रिप मार्केटिंग मंडे को किसकी?
वो तो अपडेट आने के बाद होगा ना, कोई नया कैरेक्टर आएगा तो। मंडे को किसके ड्रिप मार्केटिंग बोल रहे हो? नाफिया की फिर से? Keiko is nice, you okay? Yes, I am. नए कैरेक्टर्स की, नया कैरेक्टर कौन सा आ सकता है? अच्छा 4.4 तो ये है ना, लैंटर्न राइट। हाँ तो शायद क्लाउड रिटेनर की ड्रिप मार्केटिंग आ सकती है। कुड बी क्लाउड रिटेनर। अच्छा राइडन नेशनल देखना था ना, पहले राइडन नेशनल लेके जाता हूँ फिर कुकी। यो आज भाई हेलो, क्या हाल चाल? What you doing? I'm just doing random things and I will host this special program live stream. Genshin will let us know what is coming in version 4.3 in next version and I will host that live stream. Ul bhai hello, kya hal chal? Nice, what about you? I'm also nice. Energy recharge. Done. Keiko will see too. Okay. The fate of this world is already. अबे यार इंटरनेट लोचा कर गया यहाँ पे। भाई इंटरनेट लोचा कर गया यार। That... सही तो था, नहीं सही नहीं था, इंटरनेट की वजह से थोड़ा लोचा हो गया। स्ट्रीम पे डिले नहीं आया बट गेम में आया था।
डन। इंटरनेट का लफड़ा है, वही तो। हो गया, अभी ज्वाइन करता हूँ। नाइस, फार्मिंग हो गई। ये है राइडेन नेशनल, और यहाँ पे येलान यूज करोगे तो इट विल बी मच 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 मोर बेटर। किस चीज का काउंटडाउन चल रहा है? काउंटडाउन चल रहा है स्पेशल प्रोग्राम का। काउंटडाउन खत्म हो गई, स्पेशल प्रोग्राम स्टार्ट होगा और वहां पे हम लोग स्विच कर जाएंगे। मैं 10 मिनट में आता हूं मैगी बना के। 10 मिनट में आ जाना, क्योंकि 22 मिनट में लाइव स्ट्रीम है। 22 नहीं, 23 मिनट में। आई थिंक 23 मिनट्स के बाद गेंशिन थोड़ा टाइमर करेगा, करे तो और बेटर है। और 5-10 मिनट बैठ के बात करेंगे, और क्या। लेकिन मैगी बनाने जा रहे हो तो मेरे लिए भी लेकर आना थोड़ा, निखिल भाई। मेरे को भी हल्का फुल्का भूख लगा है, भूखा भूखा हूं मैं। तो आनंद भाई बताओ कैसा लगा, राइडन नेशनल कैसा लगा? आनंद सर जी, राइडन नेशनल कैसा लगा? हम्म, अब जरा हाइपर ब्लूम लेके चलता हूं। टाइम फॉर हाइपर ब्लूम। ब्रोकन है, ब्रोकन तो है। मोना और येलान, व्हिच वन इज इन दिस टीम? मोना और येलान? इट वाज शिंगचू, नॉट मोना। You can, if you have Yelan, Yelan will be better in Raiden National, but you can use Shingchu if you don't have Yelan. Have some order. Done. डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लिया है, अब बताओ क्या करना है और कब? डिस्कॉर्ड पे कोड्स मिल जाएंगे और अपडेट्स, अगर मैं लाइव नहीं आता हूँ, क्या रीजन वगैरह, वो सब मिल जाएंगे। डिस्कॉर्ड में रहो रहो, डिस्कॉर्ड को एक्सप्लोर करो, दोस्तों के साथ चिल करो।
हाइपर ब्लूम्स कहाँ है? कितने के? 34 के। थर्टी फोर के ह्यूज डिफरेंस तो नहीं है, बट नहिदा के बर्स्ट के साथ थोड़ा और बढ़ेगा, मतलब लगभग ना बराबर। 4 पीस गिल्डेड यूज करो, पैराडाइज वर्थ नहीं है। अभी भी ऑलमोस्ट 20 मिनट है यार। और बताओ, और कोई टीम देखना है? और कोई टीम देखना है किसी को? ये सब क्या बोल रहे हो? मैंने फार्म कर लिया पैराडाइज। जो सच है अनोस भाई, इंक्रीज है लेकिन ह्यूज अमाउंट का नहीं, मतलब वही 1-2 हजार का डैमेज डिफरेंस। क्योंकि 33 के आई थिंक मेरा गिल्डेड के साथ आ रहा था, और इसके साथ कितना आया? 34। वही 1-2 हजार का डैमेज डिफरेंस आएगा। वही ना, पैराडाइज फार्म करके रखो, हल्का सा इंप्रूवमेंट है, फिर भी बेस्ट इन स्लॉट है। बेडियो? बेडियो मतलब? नहीदा मोना शांगलिंग? भाई ये कोई टीम ही नहीं है। नहीदा मोना शांगलिंग वर्जन होगा, वो भी डैमेज, लो डैमेज वाला। 1-2 के लिए मैंने इतना सफर किया। बीडो? बीडो वाली टीम? हाँ, बीडो वाली टीम यूज कर सकते हैं। बीडो के लिए बढ़िया टीम होगी ये 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 और किसे लेके चले? किसे लेके चलते हैं? बीडो बड़ी अच्छी बिल्ड नहीं है वैसे। भाई बिना 5 स्टार कैरेक्टर के क्लियर करके दिखाओ। अभी तो टाइम नहीं है। ट्राई कर लेता, लेकिन अभी टाइम नहीं है। 15 मिनट्स में लाइव स्ट्रीम है। बिना 5 स्टार के मुश्किल है, क्योंकि दोनों तरफ हाइड्रो चाहिए होगा मुझे। दोनों तरफ क्या ही यूज करूं? नेशनल लेके जाना इसके बाद। नेशनल? नॉर्मल नेशनल? नॉर्मल नेशनल तो है ही नहीं। नॉर्मल नेशनल में डीपीएस ये होगा चोंगयून। चोंगयून तो मैंने बिल्ड ही नहीं किया है।
नेशनल, इंटरनेशनल है वैसे मेरे पास, नेशनल फ्यूनरेशनल भी है, लेकिन नेशनल जो मतलब जो एक्चुअल नेशनल टीम है वो नहीं है। क्या लगता है इंटरग्लूड क्वेस्ट आएगा? नहीं 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 नहीं, बहुत मतलब कुछ होगी नहीं। 800 प्रीमोस फिर से मिलेंगे फ्री, यस यस यस। 800 प्रीमोस कल से, आई थिंक आज ही रात से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। भी तो काफी वीक है मेरी, काफी वीक है, लेकिन फिर भी 3 स्टार निकाल दिया क्योंकि पहले हाफ की टीम बहुत ब्रोकन थी। फिर तो कुछ होगा ही नहीं इस वर्जन में, वही ना, कुछ भी नहीं होगा, बस नाविया और क्या इवेंट्स, नाविया, शॉप रिसेट, एबिस रिसेट, और जो कमीशन होते हैं हमेशा वही, और कुछ है ही नहीं अगले वर्जन में। मैं आऊंगा अगले वर्जन में, सिर्फ बातें करने आएंगे हम लोग, बातें करेंगे और स्ट्रीम एंड। मुझे लगता है इंटरक्लूड आएगा या स्टोरी क्वेस्ट आएगा, एक स्टोरी क्वेस्ट आएगा नाविया का, और कुछ नहीं। हैंग आउट आ सकता है, और कुछ तो है नहीं। हाइड्रो चाहिए होगा एक, वही दिक्कत है, बस एक हाइड्रो चाहिए होगा। हाँ हाइड्रो तो है, हाइड्रो के बारे में मैं भूल ही गया था। ट्रैवलर तो सबके पास होता है। चलो ट्रैवलर भी नहीं ले रहा हूँ। देखते ट्राई करके। शीला नहीं आई स्कूल से, शीला पढ़ाई करने में बिजी है। डेंसली भैया, डेंसली भैया को आने में वक्त होगा, मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी आएंगे डेंसली भैया। डेंसली भैया 4.4 में, क्या पता अचानक आ जाए। डेंसली भैया का कोई भरोसा नहीं कब आ टपके।
अरे यार I have failed you. फ्री रिस्पॉन नहीं हो रही है, कैच लेना था। फिश रिस्पॉन नहीं हो रही थी, वो हर 3 दिन में होगा। डीसी पे ऑनलाइन है वो, डिस्कॉर्ड पे ऑनलाइन बैठा है, फिर फोर्टनाइट खेल रहा होगा पक्का। दूसरे वर्ल्ड में चले जाओ, हाँ दूसरे वर्ल्ड में जा सकते हो, या हर 3 दिन में रिस्पॉन हो जाती है फिश, तो उसका तो दिक्कत ही नहीं है। अरे यार कितना टाइम बचा है? 6 मिनट। लास्ट रिट्राई, लास्ट रिट्राई। कोई आने ही नहीं देता अपने वर्ल्ड में। शांगलिंग कॉन्स्टलेशन 1 हो गई, शांगलिंग कॉन्स्टलेशन 4 पे ही बिल्ड करो, मैं बोलूंगा। कॉन्स्टलेशन 1 अच्छा तो है, बट मेन कॉन्स्टलेशन 4 है। विनोद मेरे वर्ल्ड से ले लो फिश चाहिए तो, ये देखो डिस्कॉर्ड पे पूछ लेना। वैसे डिस्कॉर्ड पे भी बहुत सारे लोगों से ले सकते हो पूछ के। अरे यार रिफ्लेक्स काफी स्लो हो गए, कभी और ट्राई करना पड़ेगा, कभी और करूंगा, टाइम ही नहीं है। हेलो डो फ्लेमिंगो भाई, क्या हाल चाल? अर्जेंटी लेवल 1 पे 100 के मार रहा है बर्स्ट पे, हैं? क्या बात कर रहे हो? इंस्टॉल करके कर दूं क्या पुल? क्या चल रहा है बताओ? अभी तो बस कुछ भी चल रहा है, ये टाइमर खत्म होते ही लाइव स्ट्रीम स्टार्ट होगा। स्पेशल प्रोग्राम लाइव स्ट्रीम। ये लोग ऑनलाइन आए लाइव नाउ। स्टार्ट होने ही वाला है। मैं जब ये प्रोग्राम होगा तब ये करूंगा, ठीक है? मेरा माइक ऑफ रहेगा, मैं बातें नहीं करूंगा। प्रोग्राम खत्म हो जाए उसके बाद बातें करेंगे। स्टार्ट होने ही वाला है।
वो तो पता है। लेवल 40 बस वेपन और आरटी दे रखा है। 20 to 190 लेवल 1 टैलेंट। अच्छा अच्छा अच्छा। स्टार्ट ही नहीं हो रहा यार। स्टार्ट हो जा, स्टार्ट हो जा। वाह, मेरे को फुल इग्नोर। यस, मैं भी म्यूट कर रहा हूँ, स्ट्रीम पे जा रहा हूँ, म्यूट कर रहा हूँ। है मेरा माइक फुल म्यूट रहेगा, बस स्ट्रीम चलेगा फुल म्यूट। एकदम स्ट्रीम खत्म होगा उसके बाद मैं माइक ऑन करूंगा। एक मिनट। मैं स्विच कर रहा हूं, एक मिनट। टाइमर हटा दे रहा हूं। स्टार्ट होने वाला है, रेडी हो जाओ। नाविया का वेपन मस्त हो काश, देखते हैं। मैं माइक म्यूट कर रहा हूं, एक मिनट। Okay, everyone. I assume that you know why we're here, right? I've checked the perimeter. The coast is all clear. All right, then it's time. Time to shop for the latest fashions at Chioria Boutique. Huh. Don't you think something sounds a little off about that line? Yeah, this is Chioria Boutique that we're talking about. I feel like we need something that sounds, I don't know, a little more extravagant, maybe? We'll have to talk about it later. The lights have been turned on and the audience is already here. The program is starting. Oh, hi. Welcome to the Genshin Impact version 4.3 special program. Yay! As you can see, our show is sponsored by Chioria Boutique, one of the leading fashion houses in Fontaine. But before we go any further, let's take a moment to watch the version 4.3 trailer. Camera operator. That can be a pretty technical job. Are you really up to it? Wait, you put no thought into finding a good camera angle, and the characters weren't in the shots. Positions, everyone! Nice to meet you. I am Navia, the President, Leader, Commander-in-Chief, Executive Director, and Boss of Spina di Rosula. Hey there! Yeah! Ha! Umbrella warfare, I guess. Fire! Cameras will start rolling as soon as the set is ready. Whoa, Marina's really kicking things into gear as the director. Props and lighting set the scene. Actors can get their makeup done. Extras, go over your positions. Camera ready, get the clapperboard. Actors, to your position. Lights, camera, action!
Enough, villain! Pay for the death of our mother! You're just as naive as her. Did you really think 2 muskets would be enough to defeat me? Your crimes are evident! Drop your weapons! Justice will prevail! Not bad. The actors' emotions were all on point. Let's keep that take. We'll move on to the next scene. You mean Did you really think you'd get away? Shavras? You can keep your Mora, and you can go to hell. Excellent! That was beyond mesmerizing. Let's make a film that'll make some serious waves in Fontaine. Not the kind of waves that drown people. I mean, the good kind of waves. Welcome back to the version 4.3 special program, everyone. I'm Sarah Miller-Cruz, the voice of Lumine, and today I'm joined by... Hey everybody, I'm Brenna Larson, the voice of Navia, president of the Spina di Rosula. And I'm Erica Lindbeck, the voice of Shavras. Yay! Oh my gosh, I'm so excited. This is the first time we've had you two on the special program. So excited. It's so great. Okay, so actually, we have a tradition on the program where we all get to sing everyone a little song. Oh. Huh? Okay, nice try. I've seen the special programs before. You don't want to sing a song? We can sing a, like, a I little love song singing, about listen. Genshin. You know? Genshin Impact. No, okay. Ooh. Back to business. Okay, like we mentioned before, this program is sponsored by the Chioria Boutique. So while we're sharing content from version 4.3, I also wanted to get some inspiration for shooting commercials for the boutique. We don't want to let our client down. Yeah, and speaking of new content, we can't have a new version without introducing some new characters. As you already saw in the trailer, Navia and Shavras will be our new playable characters. Yay! I'm sure many of our viewers are already familiar with Navia after seeing her throughout Fontaine's Archon quest. But who is Shavras? Who indeed? Other Fontaine characters have already mentioned Shavras before in their voice lines, but Shavras will finally be making an official appearance in version 4.3. I'm so excited! So exciting! Oh, by the way, what do you think of letting one of our characters from the new version take the lead role in our commercial? Oh, well, I mean, if we're shooting a video for Chioria Boutique, then I think Navia would be an obvious choice. After all, Navia's clothing was designed by Chiori herself. Wait, Erica, that was actually a really natural-sounding product placement for Chioria Boutique. You're amazing at this. I know it sounds like product placement, but Chiori really was the designer who created Navia's outfit. Next, let's have a look at her fashion show. Ooh, and by fashion show, we mean her character showcase. I always say that blind optimism isn't the answer. If you want a bright future, you have to go out and seize it with your own 2 hands. This one's got your name on it. A proper send-off from the Spina with Love.
I'm sorry, can we take a moment to appreciate how perfectly Chiori customized Navia's clothes and accessories to reflect her personality? She clearly pays a lot of attention to the small details. Erica, I love how seriously you're taking the sponsorship. It's really great. It's important. While we're on this topic, though, Navia's parasol seems pretty interesting. On the outside, it looks like a delicate accessory used to block out the sun, but on the inside, there's actually a secret firearm that can be used to ward off enemies at a moment's notice. It's elegant and fierce all at once, just like Navia herself. Exactly. Even when it comes to her enemies, Navia is not the type to eschew basic etiquette, so she prefers to maintain appropriate distance while in combat. While using her elemental skill, Navia opens her gunbrella and fires multiple Rosula shard shots that can pass through opponents, dealing geo damage upon a successful strike. Ooh. For a period of time after using her elemental skill, Navia's normal, charged, and plunging attacks will deal increased damage and become infused with the power of geo, which cannot be overridden. Now, when Navia's in combat, there are these little markings around her that look like bullets. I wonder if that's some sort of ammo for the gunbrella? Oh, yeah. Yes, you guessed it. When a character in the party obtains an elemental shard created from the crystallized reaction, Navia will gain crystal shrapnel charges. Navia will consume these charges after unleashing her elemental skill. Her skill damage increases with the number of charges that she's accumulated. Oh, okay. So you're saying that Navia's elemental skill becomes more powerful if she works together with other characters in the party to trigger the crystallized reaction. Yes, exactly. Okay, great. Navia's elemental burst calls forth the Rosula Dorata Salute, which unleashes a massive bombardment on opponents in front of her, periodically dealing geo-elemental damage. I should also mention that Navia will accumulate crystal shrapnel charges at certain intervals if she strikes enemies with the Rosula Dorata Salute. Ooh, now that salute is spectacular. That's awesome. I heard that the Spina di Rosula likes to perform firearm salutes before important negotiations. You know, as a way to celebrate future success. And don't misunderstand, you guys, it's not an intimidation tactic at all. Oh, okay. Yeah, I guess that's just the Spina's way of showing respect in their own way. Yeah, totally. Not intimidating at all. No. As the president of the Spina di Rosula, Navia is always trying to collect the latest intel by exploring all corners of Fontaine. When Navia is dispatched on a 20-hour expedition in Fontaine, rewards gained will be increased. Okay, so we just mentioned that Navia is the president of the Spina di Rosula. So I think we should bring up Spina's contributions to averting Fontaine's prophesized crisis. I mean, it was all thanks to Navia's leadership. Exactly. Some people even lost their lives during that disaster. I'm certain that those events weighed heavily on Navia, but she remained tough and committed to leading the Spina. Yeah, and while we're on the topic of Fontaine's crisis, though the prophesized dangers are over, the town is probably still busy rebuilding everything, right? I bet Navia's gonna be occupied with that for a long time. Oh, definitely. That's something that travelers will be able to see for themselves. Navia's story quests, the Rosa Multiflora chapter, will become available in version 4.3. The Spina will be working diligently to rebuild Poisson. Though repairing the houses will be straightforward, the emotional distress may be much more difficult to address. If you're curious about how Navia and her crew are going to proceed, then be sure to check it out. Oh, I'm so excited! Yeah, me I'm too. looking forward to seeing what happens. Okay, so now that we've introduced Navia, it's time for Shavras to be in the spotlight. Okay, I know that since she's a newcomer, you probably can't wait to learn more about her. So let's get right into it. Okay, how should I introduce her? First off, Shavras is the captain of the Special Security and Surveillance Patrol. It's a Fontainian organization that handles all sorts of difficult cases and dangerous criminals. Ooh. She doesn't like to appear in public without good cause, so if you happen to run into her, it's likely that you're in some sort of trouble. But as long as you're a law-abiding citizen, there's no need to worry. Shavras is actually really easy to get along with outside of work. Oh, Feastos are just the best snack. They're easy to carry with you and go with so many sauces. Final warning!
What? That was so fire. And I am not just talking about her skills. Oh my gosh, look at her idol animation. I love that she loves snacks. That is so awesome. She's a girl's girl, and she gets it. Yeah, she gets it. She really does. She's not exactly what you'd expect from the captain of the Special Patrol, though, right? I guess that's kind of true. I mean, Chevress's work as a captain can be really stressful. I mean, I can't blame the girl for indulging every once in a while to relieve some stress. She even adjusts her training regimen to make up for her snacking habits. In fact, she trains more than any other member of the Special Patrol. Her platoon really admires her for that. Wow. Okay, she's got some willpower. That is awesome. She's really admirable. The Special Patrol prioritizes combat ability above all else, so the organization often attracts some eccentric personalities. Okay. Yeah. The Special Patrol used to have problems with insubordination, but ever since Chevress took control, everyone has fallen into line, which does not surprise me at all. She commands respect among her peers, and she's a formidable fighter, and she leads by example. Though she demands excellence from her platoon, she holds herself to even higher standards. She always tries to be an example for others to follow, whether it's investigating cases or in marksmanship practice. And it looks like a lot of her skills involve using a musket. She must be a pretty good shot. For sure. Chevress and her musket are basically partners in crime. They're inseparable. She definitely knows her way around a firearm. Chevress uses her musket to fire at opponents during her elemental skill. For a period of time after unleashing her elemental skill, Chevress will continuously restore HP to the active character on the field. During her elemental burst, Chevress fires an explosive grenade with her musket, which will split into secondary explosive shells upon impact. Haha, impact. Whoa. Wait, I noticed that Chevress has bullet-like markings around her during combat. Can she shoot a special type of ammo? That's right. Chevress obtains an overcharged ball when a nearby party member triggers the overloaded reaction. Holding Chevress's elemental skill will consume this special ammo to unleash an even more powerful pyro attack that covers a larger AoE. This attack will also grant an attack buff to all pyro and electro characters in the party. Okay, so that's where the name Overcharged Ball comes from. Chevress actually came up with the name herself. Oh. She was reading a novel where the protagonist believed that names held a lot of power. If you give something a cool-sounding name, then you've given yourself an advantage over your enemies. That kind of logic resonated with her, I guess. Well, I guess she has a point. Oh, I should also mention what happens if Chevress is paired with all pyro and electro characters. If your party contains at least one character of either type, then triggering the overloaded reaction will cause an opponent's pyro and electro resistances to decrease. Okay, so it seems like Chevress could really shine in an overload team comp. But I also did notice that Chevress isn't solely limited to a musket. She also uses a polearm in combat. Okay, honestly, if I were a criminal, I feel like I'd be pretty nervous if she came after me. Oh, for sure. Most people who have something to hide avoid her like their lives depend on it. And maybe it does. In all seriousness, though, that's why Chevress trains so hard. She has to be able to catch a wide variety of cunning criminals who try to evade her at all costs. So when Chevress is in your party, stamina consumption from sprinting is decreased. Oh, I love that. These two new characters are great. Both of them would be great leads in our commercial. I don't know, it's so hard to choose. I know. And I will make this even harder for you. Oh no. We're about to take a look at what event wishes that travelers can look forward to in version 4.3. The candidate pool for the lead role of our commercial is about to get even bigger. Oh my gosh. In the first half of version 4.3, travelers can look forward to event wishes for Navia and Ayaka. A new 5-star claymore, Verdict, will also be featured in the weapon event wish. In the second half of version 4.3, we'll have returning event wishes from the Raiden Shogun and Yoimiya. During this time, Chevress will also receive a huge drop rate boost. Yay. Be sure to check them out if you're interested. That's awesome. Travelers can also look forward to 2 new artifact sets in version 4.3, Songs of Days Past and Nighttime Whispers in the Echoing Woods. Be sure to keep an eye on future announcements to learn more about them. This seems like the perfect time for our first break. We've shared a ton of information so far, and I bet travelers could use some time to digest it all. You're right. For sure. Definitely. Let's take a break while we take a look at the second group of redemption codes. The version 4.3 special program is brought to you by Chioria Boutique and will return shortly.
Welcome back, everyone. So, we've thoroughly discussed our casting options for the Chioria Boutique commercial. But the content of the commercial is also important, right? Do you have any ideas? If we're making a commercial for Chioria Boutique, then how about we include some event footage of Chiori? Oh! Yay! Chiori is actually going to appear in the event for version 4.3. What? While the travelers have been able to see her store in the court of Fontaine, they'll finally get to meet her in person. Yes, I know. Travelers can also look forward to meeting Ayaka and Ayato in Fontaine. Chiori suggested that they should stop by, so here they are. So cool. Hey, this is actually the perfect time for a word from our sponsor. An Inazuma-born fashion icon, Chiori! Chioria Boutique is your one-stop shop for the latest and most influential fashion in Fontaine. That is right. Chiori is acquainted with the Kamisato siblings because she's also from Inazuma. She actually introduced Ayaka and Ayato to Xavier and recommended that they make the trip to Fontaine for the Fontanalia Film Festival. So exciting! Will you tell us more about the Fontanalia Film Festival? Oh, the Fontanalia Festival was established to commemorate the legendary Lock Knights. According to the myths, they went on a quest to search for the Oceanids and eventually welcomed the Hydro Archon Egeria to Fontaine. It's one of the most important festivals in Fontaine, like what the Windbloom Festival is to Mondstadt and Lantern Rite is to Liyue. So exciting! The Fontaine Film Association proposed the Fontanalia Film Festival earlier this year, and during this time, the public may submit films for evaluation. The entry with the highest score will be given the Farina Award by the association. Well, we can see Farina working with Ayaka and the others here. So wait, does this mean that there's a chance that Farina might win the Farina Award? Okay, now I'm intrigued. Well, I'm sorry, but I'm gonna have to leave you in suspense. If travelers are curious about what Ayaka and the others are doing in Fontaine, or how Farina fared, you'll just have to play the event when the new version becomes available. So we know that several friends from Inazuma will be in Fontaine for the Fontanalia Film Festival, but travelers have so much more to be excited about. Travelers will also have the opportunity to participate in a variety of activity booths during the festival. Each one will have a different theme. Ooh. So cool. The first activity booth is the 1000 Pace Interdiction Arc Minute Sharpshooting Zone. In this activity, travelers will use the Special Security and Surveillance Patrol simulation device to practice targeting and shooting opponents. Yep. The Special Patrol wanted the public to experience how fun target practice can be. And the second activity booth is called Trick Shots, Tricky Lights. In this activity, travelers will use the studio's special lighting effects to film a fight scene. Take advantage of the buffs brought about by the special lighting effects to defeat an endless stream of opponents and obtain a higher score. So cool. Those special lighting effects are really giving off old movie vibes. Navia's movements are also super smooth. It's all so atmospheric. Oh, for sure. But not everyone is enjoying the fun and games. Travelers will meet a contract employee at the third activity booth. She needs some help with her demanding client. During the activity Extreme Drive, travelers will help her test out stabilization mecha balls. Look at how the traveler chases after those stabilization mecha balls. Okay, I bet that contract employee can relate since she's being chased down by that client. Totally. Stabilization mecha balls seem pretty ordinary, but they're actually very agile. They'll automatically avoid all testers by moving in the opposite direction of your movement. You can find jump boosters around the testing grounds. Travelers can use them to jump higher and further, which is perfect for quickly traversing to the other side of a stabilization mecha ball. Travelers in co-op matches will have to find a way to herd as many stabilization mecha balls into their target area as possible within the time limit. The more mecha balls that end up in your area, the more points you'll earn. The fourth activity booth is called Into the Frame. In this activity, travelers will get to shoot their own scenes by experimenting with different camera positions and narration techniques. Cool! We get to make a movie! That's awesome. Travelers might remember helping out Xavier with some filmmaking back in Inazuma, but this seems more professional. Wait, maybe this can be the inspiration for our commercial. Oh. Now that I think about it, a Fontanian man went to Inazuma to shoot a film. I guess international travel can be a source of artistic inspiration. That must have also been true in Chiori's case.
since she opened Chioria's boutique in Fontaine. Ooh, that could be a strong theme for our commercial. Actually, Ayaka and Ayato aren't the only Inazumans traveling abroad in version 4.3. Kuki Shinobu just arrived in Liyue for her class reunion. Yeah, and Ito decided to tag along as the boss of the Arataki gang. And he brought his Onikabuto with him. I think he plans to train his beetles for battle. Wow. Yeah. The Arataki Blazing Armor Beetle Battle Boot Camp. That name is definitely very Ito. Right, for sure. And there was also a beetle battle event in version 3.4, right? Ito battles against a super powerful beetle battler. I believe his name was Grandmaster Hanakato? Yep. Grandmaster Hanakato made an impressive showing during the last beetle battle event. This time, he's made the trip to Liyue with Ito. It seems like the two of them have met a mysterious new beetle battle master. Ooh. What? Who is it? Tell us. Tell us. I'm sorry. I can't give that away. Travelers will have to discover their identity during the event. Aside from meeting this mysterious new beetle battle master, travelers can also look forward to new ways to battle. While the movement and charge mechanics remain unchanged from the original event, travelers can now also instruct Onikabuto to use Guard to defend against Electro Bullet and Jet Stream attacks. Make use of the movement, charge, and Guard strategies to topple your opponents no matter what they throw at you. Master them, and you'll be ready to tackle the ultimate trial of the strong. Ooh, trial of the strong. Travelers can look forward to encountering an old friend in the Fontanian countryside. That's right, Ullman came to Fontaine and he brought his treasure map and treasure-seeking Seelie along with him. Yay! Our mini Seelie friend is back! It's so cute. Travelers can help restore the Seelie's vitality by absorbing energy from the locations that are marked on Ullman's treasure map. In return, the Seelie will guide us to the locations of buried treasure. After collecting ancient iron coins during this event, you can exchange them for various rewards, including a mini Seelie in your preferred color. Ooh. Okay, so in the event preview, it looked like some of the treasure is located underwater, but when I first arrived in Fontaine, I discovered that Seelie couldn't follow me underwater. Is this treasure-seeking Seelie different? That is very observant of you. Oh, thank you. In this iteration of the Lost Riches event, a new mini Seelie named Brilliance will be available. This new mini Seelie can travel underwater. Amazing! Yeah! Treasure isn't the only thing that you'll discover in Fontaine's countryside. You might also come across a mysterious domain guarded by a unique swordmaster who searches for the meaning of battle. During the Dance of Resolute Will, travelers will get the chance to participate in combat challenges. Each challenge stage will contain 2 rounds. Travelers must select their party compositions before the challenge starts. One of your chosen characters must be used in both rounds, but no other character can be repeated. Oh, okay. After you complete a Blade Dance objective during a challenge, you will obtain a heightened verve buff. Defeating opponents while heightened verve is active will grant you more points. And another old friend is returning in version 4.3. That's right, it's Lieben! Yay! Oh. And if Lieben is around, then that must mean we'll have a chance to trade a bunch of items for Primo Gems again. Ooh, exciting! Okay, so it looks like Lieben isn't the only old friend we'll be reunited with in version 4.3. Several familiar faces will be joining the Genius Invocation TCG. After this update, travelers will have the opportunity to challenge characters around Fontaine. Ooh. A new Fontaine-themed table customization will also be available. I'm so excited to see players challenge some Melazines. I know, so exciting. Travelers can look forward to the addition of several new cards, including 6 new character cards, plus 5 new monster cards, such as Dvalin, Signora, and Ajdaha, will be obtainable from the corresponding tavern challenges. But that's not all. The Forge Realms Temper event will also be making a reappearance, and there will be an update to the Heated Battle mode. Be on the lookout for future announcements. There's TCG content to look forward to outside the game as well. The Genius Invocation TCG Asia Invitational will officially begin in January 2024. What? Travelers can look forward to some friendly competition between 16 of the top TCG players all across Asia.
I heard they're some of the best in the region. So cool. Be sure to follow the Astro Carnival X or Twitter account to stay up to date on the latest news about this epic showdown. Oh my gosh, this is all so exciting! Well, hang on to that feeling, because we're taking a short break to look at the next group of redemption codes. We'll be back to sharing more exciting information about version 4.3 in just a moment. Yay! Welcome back, travelers! We've introduced a lot of content, and we've gotten a ton of inspiration for our commercial. Honestly, our promotion is definitely shaping up. Totally. But before we reveal our new idea, let's dive into the system optimizations that the project team has prepared for version 4.3. Okay, first we have some artifact-related optimizations to introduce. With an ever-increasing amount of artifact sets to choose from, many travelers may have been hoping for a better and quicker way to filter and locate desired artifacts. After the version 4.3 update, travelers can check out artifact set recommendations for a given character to see what artifact sets active players have been choosing for that character recently. That's cool. In addition, an automatic locking function has been added. Now, when filtering artifacts in your inventory, you can lock the artifacts that fit your filter specifications in batches. With the automatic locking function, newly acquired artifacts that fit your locking criteria will automatically be locked when added to your inventory. Oh, that's awesome. Travelers can have up to 2 preset auto-lock plans for each artifact set. Travelers can choose their own or follow the recommended settings summarized for active player data. Since it may take some time to collect the necessary statistics, new artifact sets will not feature recommended locking settings immediately. Okay. Yes. Of course, if you can lock artifacts in batches, you can unlock them in batches as well. Travelers can look forward to both of those features in the new update. That's not all, though. What? Travelers will be able to sort artifacts by 3 different attributes. Plus, the artifact enhancement screen will allow travelers to add a greater amount of enhancement materials at once. An enhancement limit feature will also be available. Hopefully, these optimizations will not only make artifacts easier to find, but also quicker to level. Be on the lookout for future announcements to learn more. The project team is always working hard to address your survey feedback. So, travelers should look forward to further artifact-related optimizations in future version updates. Improvements to equipping artifacts and other artifact-related optimizations are all in the works. In addition, the project team has made adjustments to provide smoother ascension and enhancement experiences for travelers. When you level up a character, enhance an artifact, or enhance a weapon, you no longer have to click so many pop-up windows. Oh, that's awesome! As a new player using a few 1- and 2-star materials to level artifacts, the whole process might feel a bit slow, especially with pop-up windows appearing. Totally. This new optimization significantly reduces the amount of pop-up windows that we have to click through, so travelers can look forward to a much smoother enhancement and leveling process. The next optimization has made it easier to repeat domain challenges. Previously, travelers who tried to continue domain challenges would be sent to the entrance of the domain. This meant they would have to run all the way to the center to start the challenge. But after this update, travelers who choose to continue in a domain challenge will load right next to the area where you actually start fighting, which is amazing. So happy farming, everyone! This should make it way easier for players to farm artifacts for Navia. Oh, yeah, True. definitely. In addition, version 4.3 has made it easier to clear your quest backlog. Archon Quest Chapter 2, Act 4, In the Depths, An Unexpected Reunion, takes place in the underground mines of the Chasm. In the past, travelers had to complete the world quests
Chasm Spelunkers, and the Heavenly Stones debris before being able to proceed to the Archon quest. In this update, travelers no longer need to complete those 2 world quests. Instead, travelers can speak directly to the miner who issued the commission to unlock a teleport waypoint. It will take them to the corresponding area and automatically trigger the next steps of the Archon quest. Oh, that's amazing. Yeah. This will hopefully make it easier for travelers to quickly progress through Archon quests. So cool. So that'll make it significantly easier for new or lapsed players to access the Archon quest and claim those sweet, sweet intertwined fates as fast as possible. Yes, definitely. For sure. Also, one-click expeditions will be available starting in version 4.3. This will allow travelers to claim expedition rewards and repeat expeditions with a single click. Travelers will also be able to claim processed ingredients and forged items with a single click. Oh, sweet. That's going to make it easier to collect rewards from Catherine. Definitely. There's also a ton of other quality of life improvements in this update. For example, optimizations have been made to enemy tracking with the Adventure Handbook and character selection logic during crafting and forging. In addition, when performing mystic offerings, travelers will now be able to add artifacts in batches. There's a lot to look forward to, so be sure to check future announcements for more information. Okay, moving on from optimizations, a new Fontaine-style realm layout will be added to the Serenity Pot. Simply purchase the corresponding items from Tubby to unlock it. Ah, it looks like an aquarium. I know, right? Travelers can use ocean currents to travel between the islands in this layout. Some islands even have ponds that travelers can use to keep fish. It looks like a cool underwater kingdom. It's just so pretty. I know. And they'll be even prettier once travelers have the chance to make them their own. I'm so excited to see what everyone's going to come up with. Especially my friends' teapots. You just want to copy their designs, don't you? I don't know. Maybe. I knew it. I have another piece of super exciting news to share with everyone. Okay, I know, right? The annual Genshin Impact online concert, Melodies of an Endless Journey, is coming soon! Yay! I heard this year's concert is going to celebrate Genshin's classic melodies in an entirely new way. Let's take a sneak peek at some of the amazing moments that this concert has in store. The 2023 Genshin concert held in Shanghai last September will also be online soon, so stay tuned, travelers. Whoa, so we have 2 online concerts to look forward to? Yep. Further details will be announced across Genshin Impact's official social media accounts, so be on the lookout for more information. At the end of version 4.3, travelers can also look forward to the release of the 4th Genshin Impact character OST album, Stellar Moments Volume 4. The album will feature 26 character songs created by the Hoyo Mix team. Wait, we're finally getting Alhaitham and Wanderer's OSTs! Yep, and Farina's song too. Her song All the World's a Stage has already been getting a ton of love. Oh, that's awesome. Okay, well, that's all the new information we have to share about the update. So, I guess that means it's time for the version 4.3 special program to come to a close. Aww. But we haven't even come up with a plan for our Chiorio Boutique commercial.
Actually, we've already finished shooting it. You're right. The special program was a pretty good commercial. I'm certainly not going to forget the name Chioria Boutique after this. Totally. Oh my gosh, we really did cover a lot of important information today. For sure. The most important part is our final word from our sponsor, Chioria Boutique. I'm just kidding. I'm just kidding. I just wanted to let everyone know that I'm so excited to be a part of Genshin Impact, and I cannot wait for all of you to meet Chevres. Totally. I feel exactly the same. Can't wait to see more Navia in her fighting action. And also, can't wait for little swimming sealies. Yes. They are so cute. So Oh my cute. goodness. And I think the new mini games are really fun, especially the one where we get to make like a little movie. Yes. Well, I am just so glad that the three of us have been able to do the special program together. This has been so much fun. Too. Really fun, And yeah. that's all we have for the version 4.3 special program. I hope that everyone's looking forward to experiencing all this exciting new content for themselves. Be sure to check it out when the update goes live. Yeah. Okay, bye. All right, bye guys. See you later. Bye. चलो एंड हो गया. अब पूछो किसको क्या पूछना है. न्यू एरिया देना चाहिए था. न्यू एरिया देना तो चाहिए था यार. प्रीमोस बहुत कम मिलेंगे, लेकिन अब इट इज व्हाट इट इज. ई नहीं रिडीम कोड दिया. हाँ, मैं 1 मिनट पिन कर देता हूँ. 1 मिनट, मेरे खुद को भी रिडीम करना है. रुको. मैंने फर्स्ट वाला किया है. रुको मैं तीनों ही पिन कर देता हूँ. पहले डिस्कॉर्ड पे मैं भेज दूँ सबको. यहाँ पे भी पिन कर दे रहा हूँ. एक मिनट गाइस, 1 मिनट. I see the value in my own work, but I also see the meaning in all the endeavors of the people of Fontaine. I believe I will continue to take pride in fulfilling my duties. Water comes in many flavors to the discerning palate. Mondstadt's water is crisp and pure, while water from Liyue has an enduring aftertaste. In Inazuma, the water possesses a depth of flavor unlike any other. Sumeru's water, meanwhile, has a rich and complex flavor profile, but it must be savored patiently to fully appreciate it. चलो पिन हो गया. कोड मार लो, कॉपी पेस्ट. नहीदा निकालूंगा, कॉन्स्टलेशन 2 कर दूं, राइडन. दोनों ही बढ़िया है, बट ओवरऑल वैल्यू मुझसे पूछोगे राइडन और नहीदा में से, मैं बोलूंगा नहीदा कॉन्स्टलेशन 2 निकालो. नहीदा और राइडन के कॉन्स्टलेशन 2 में से नहीदा का नहीं बेटर होगा. एक डन.
दूसरा डन। और ये तीसरा डन। ब्रो अब तो राइडन आएगी, राइडन तो आएगी, राइडन को तो आना ही पड़ेगा ब्रो। फटाफट कॉपी मार लो, मैंने खाया नहीं है, मुझे भूख लगी है। मैं फटाफट स्ट्रीम एंड करूंगा, उससे पहले झटापट सब कॉपी पेस्ट मार लो, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो, डिस्कॉर्ड में मिल जाएगा परमानेंट। और मैं रात के स्ट्रीम पे भी पिन कर दूंगा, रात वाली जो स्ट्रीम आऊंगा उस पर पिन कर दूंगा मैं। कर भी दिया रिडीमर, नाइस नाइस नाइस। और 800 प्रीमोजेंस भी मिलने वाले बाय द वे कल से लेके फिर से गेंशिन नॉमिनेट होने पे ही दे दिए रिवार्ड्स, तो 800 और मिलेंगे। रात की स्ट्रीम है क्या? यस यस, बट वो थोड़ा सा लेट स्टार्ट करूंगा मैं, मतलब अभी के टाइम पे वही सेम टाइम, नॉर्मल टाइम से थोड़ा लेट। अभी तो मैं खाऊंगा, थोड़ा लेट जाऊंगा, फोन चार्ज पे लगा दूंगा और फिर रात को आऊंगा। Ah, my apologies. This heavy rain must be quite an inconvenience for you. तो चलो, सबने कॉपी पेस्ट मार लिया ना? सबने मार लिया है कि नहीं? कॉपी पेस्ट बताओ। इट्स टाइम टू एंड दी लाइव स्ट्रीम। मैं तो लाइव स्ट्रीम के साथ ही रिडेम कर लेता हूँ। आंटी पुलिस बुला लेगी पर पार्टी यूं ही चलेगी। पार्टी नहीं चलेगी निखिल भाई यार, फिलर पैच है। पार्टी तो 4.4 में चलेगी। हाँ लेकिन पुल्स होंगे भाई। वेपन वैनर मस्त है, वेपन वैनर मतलब चैड वेपन वैनर है। वही तो, मेरा क्लास चल रहा था, रात को आएंगे और फिर बातें करते हैं सब कुछ, ठीक है? चलो अभी स्ट्रीम तो मैं एंड कर दे रहा हूँ, मिलते हैं रात को। चलो चलो मैं चला गाइस, रात को मिलते हैं, बाय बाय।